some relief. So we projected our demand to our higher quarter to give us. I think we lost you there, sir. Video please. Okay. We purchase many things in the name of authorization of other thing, but we are utilizing it for the other purposes, just for the welfare of the troops, because we know creating a proper infrastructure required a 5 years plan. Right. But we have to occupy that place. Exactly. And so I completely understand. So there is like Yes. Akhil, that is not corruption, that is corrupt practice. There is a very fine line difference between that, sir. I do agree. What you call a corruption and what you called a necessity. Corrupt जहाँ तक डिफेंस स्टोर्स को डिविएट करके कहीं और यूज करने का सवाल है सर, वी हैव अ प्रोसीजर प्रोविजन ऑफ टेकिंग डेविएशन सैंक्शन फॉर दो जो स्टोर्स आप वहां अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं और कहीं और करना चाहते हैं तो उसका सैंक्शन ले लीजिए, डेविएशन सैंक्शन मिलता है उसका। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपने सीरियस शीट जो है ले लिया इसके लिए डिफेंस पर्पस के लिए और कहीं अगर छत पे डालना है लीक हो रहा है तो आप डेविएट नहीं कर सकते। यू कैन ऑलवेज टेक डेविएशन सैंक्शन। लेकिन sir, that's what I'm saying, sir. If we hadn't taken that deviation sanction, whether this will amount to a corruption, sir? अरे यार ये बताओ कि ये स्पेस अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, you people are dragging the discussion towards wrong side. Yeah. Okay. So I think like we can conclude here very peacefully that like there are good things, there are bad things that are happening by jugaad. लेकिन सर corporate जैसे corporate terms में, I mean not in the BSF parlance, मैं भी थोड़ा सा डाइवर्ट होकर जा रहा हूँ। corporate terms में एक concept होता है सर, it is called CYB. Always cover your back. TYB. CYB, cover your back. Cover your back. हमारे पास भी इसका एक है पर वो हम बताएंगे नहीं। वो फौजी टर्म में है, वो फौजी टर्म में है। तो बेसिकली आपको अपना जैसे है कि आपको अपनी पीठ बचा कर रखनी पड़ती है। बिल्कुल। इसीलिए मुझे मालूम है सर क्या हो सकता है वो। बिल्कुल वो पता होना चाहिए भाई, आप फौजी क्लासेस ले रहे हैं तो पता होना चाहिए। पता है मुझे सर, इसलिए। लेकिन तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है और दैट फैक्टर परसिस्टिंग एवरीवेयर, आइदर इन गवर्नमेंट सेक्टर और द प्राइवेट सेक्टर। एग्जैक्टली। तो हमेशा जो भी आप करें, जो भी जुगाड़ लगाए, प्लीज कवर योर बैक। तो इससे आप लोगों के ऊपर कभी बात नहीं आएगी, जैसे यू विल ऑलवेज बी सेफ फ्रॉम एनी ऑफ द हार्मफुल। यस। इसमें अगर इंटेंशन आपका ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटेंशन आपका खराब नहीं होना चाहिए। आप जो है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को सबसे टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं या नेशन को टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं। बिहेवियरल कंट्रोल ये बहुत सही कहा आपने भाई। Am I capable? अगर आपका इंटेंशन सही हो ना तो कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। इवन कि आफ्टर इंक्वायरी भी अगर कोई करता है ऊपर से तो तब भी वहां पे भी सहयोग ही रहता है। लेकिन आपका इंटेंशन और मतलब कि वेलफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। बिल्कुल। It is survival of the man to protect the border in very harsh conditions. You are diverting your resources to make some comfort to them. नहीं, एब्सोल्युटली सर। तो वो बात एकदम ठीक है, लेकिन बस वही मूल मंत्र याद रखिएगा कि CYB। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हम इतना आर्ट सिचुएशन में, इतने आर्ट उसमें क्या नाम है एटमॉस्फेयर में काम करते हैं और हमें करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। और प्रोग्रेस कहीं पर भी रातों रात नहीं हो सकती, इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात नहीं खड़ा हो सकता है। सेक्शन लेने के लिए पता चला कि हम भेजेंगे, साल भर के अंदर अगर आ जाए तो फिर कोई बता दे। ये हर यूनिट में, ऑलमोस्ट हर यूनिट में होता है। मैगजीन की डेविएशन सैंक्शन 75 से 80% लोकेशन में लेनी पड़ती है और हर साल हम लेते हैं, लेकिन क्यों नहीं बन रही है? जब से मैंने ज्वाइन किया तब से मैं देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है हमें
और देशमुख हमारी सर को पहले आप ये बताइए। सुजीत एक मिनट सुजीत, एक मिनट। हमारी इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि हम रातों रात जो है इसको कर लें। कई जगह गवर्नमेंट को आंख बंद करना पड़ता है। जैसे हम जुगाड़ पे बोल रहे थे, अगर सारे जुगाड़ गवर्नमेंट हटा दे, आप देखिए मार्केट में, देखिए मार्केट में जो जितने एजेंसी हैं, दुकानें हैं, बिल्टअप एरिया में लगे, उनके सामने जो ठेले लगते हैं, रेडी वाले लगते हैं, वो क्या है? वो सारा जुगाड़ है। अगर उसको एक साथ ही हटा दें तो पूरे सोसाइटी में डिस्टरबेंस फैल जाएगा। लोग कहाँ जाएंगे? चोरी उचक्का, मारपीट, लूटपाट सारे बढ़ेंगे। तो इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। इसलिए जुगाड़ उतना बराबर। अशोक जी, जी सर। अशोक जी, सर वो ऐसा है कि इंडियन इकोनॉमी इज वेरी मच स्ट्रांग, बट हाउ मच आवर इंटेंशन टू इनकट द मनी इन विच सेक्टर, दैट इज द थिंग. Because my intention is to I have to required amount is be incurred in this area, but यहाँ ना खर्च करने के अलावा उसको दूसरी जगह खर्च किया जा रहा है. तो ये डिपेंड करता है एग्जीक्यूटिव, कौन सी एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वेयर दे वुड लाइक टू इनकट द मनी फॉर सर देयर मेरी बात सुनो सर, इंटरेस्ट. जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक तो जवानों से ड्यूटी करानी है, जवानों की लाइफ कंफर्टेबल करानी है. वी आर नहीं सर, वो हमारा कर्तव्य है सर, हमारा बिल्कुल. तो हमारे सर पर है ना, आज के डेट में हमारे बॉर्डर घास का पे इतनी छप्पर बनाना कंपोजिट है, ड्यूटीज बन रही हैं कील सर. ठोकनी है, वो तो हम ही बनाएंगे. बस ठीक है सर, जब पैसा मिलेगा तब मिलेगा. ना हम उस लेवल पे है, ना हम उसको डिसाइड कर सकते हैं. जब मिलेगा तब मिलेगा सर. अभी हम चर्चा को विराम देते हैं सर, अभी चर्चा को थोड़ी सा विराम देते हैं, थोड़ा सा हम लोग चीज बोलूंगा जुगाड़ यहाँ की पर, चर्चा को विराम देते हैं. मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा यस कि सर. कमांडर कभी CYB की चिंता नहीं करता, कमांडर कमांडर होता है. बिल्कुल जो होगा देखा जाएगा सर. बिल्कुल सही बोले हैं सर आप। जो होगा देखा CYB की जाएगा चिंता सर. करने लगे तो फिर कमांडर नहीं रहे हम. लड़ाई नहीं लड़ सकते हमारे हम, कमांडर तो आप ही हो सर. हो नहीं, हम सब कमांडर हैं. गिरी सर सुपर कमांडर है तो. सुपर कमांडो थ्रो हम लोग बचपन में कॉमिक्स पढ़ा करते थे सर, वो है आप. हम छोटे आदमी हैं. अरे नहीं सर, आप सुपर कमांडर हैं सर. हाँ, अच्छा ठीक है सर. तो हम लोग थोड़ा सा, जैसे ये है कि थोड़ा सा हम लोग डिविएट हो गए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा जैसे ये 3-4 टॉपिक्स बस और कवर करने हैं, फिर उसके बाद वी कैन क्लोज. तो दूसरी जो हमारी जो एक वो होती है शॉर्टकमिंग, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली अ शॉर्टकमिंग, मतलब वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर नॉट एबल टू इनोवेट इज सेल्फ बिलीफ. तो कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये काम करेगा या नहीं काम करेगा, ये जुगाड़ बैठेगा कि नहीं बैठेगा, या इनोवेशन बैठेगा कि नहीं बैठेगा, इसलिए हम लोग उसको करते नहीं. कभी कभी हम लोगों को अपने ऊपर संदेह होने लगता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर कर पाऊंगा तो इसका क्या फर्क पड़ने वाला है. तो ये हमारी चीजें आने लगती हैं. और तीसरा हमारा नॉर्मेटिव है कि जैसे है कि लोग क्या कहेंगे. तो ये सारी चीजें हैं. ऑल्दो आई डोंट थिंक एनी ऑफ दीज थिंग्स अप्लाई टू BSF, इसलिए मैं ज्यादा चर्चा यहाँ पर नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग बिंदास हो, आप लोगों को जो करना है आप लोग कर देते हैं. लेकिन यूजुअली कॉर्पोरेट सेक्टर में ये लगता है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग बिंदास है, आप लोग कर देते हैं. मिस्टर देशमुख, यहाँ पे मैं बस 5 सेकंड लूंगा। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में भी आती है, हम सारा ये देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन लास्ट में डिसीजन लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के हित में क्या है. वहीं पे इंटेंशन आ जाता है हमारा. एग्जैक्टली. इसलिए जैसे हम लोगों ने पहले स्लाइड में चर्चा की थी डिस्कवरिंग प्रायोरिटीज में, कि हमारे गोल्स, हमारे एक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होने चाहिए. इफ देयर इज एन अलाइनमेंट, then everything falls into the place. If there is not an alignment, like हमारे actions are not benefiting our organization, तो हमारे actions become futile. So it is very important from an organizational perspective, from an organizational development perspective, our actions and organizational organizational objectives should be aligned. Alignment हुआ, सब बढ़िया. Okay, so I'll quickly move forward. हाँ, तो अगला है creating options. तो इस कोट को जरा पढ़िए आप लोग. ये जो कोट है एक मैडम ने दिया है, एमिली मैडम ने दिया है. तो नथिंग इज मोर डेंजरस देन एन आइडिया व्हेन यू हैव ओनली वन आइडिया. नथिंग इज मोर डेंजरस देन एन आइडिया व्हेन यू हैव ओनली वन आइडिया. थोड़ा भारी है. भारी है ना? तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? फिक्स्ड माइंडसेट
कुछ दूसरा कुछ सुनना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, जो एक बार दिमाग में आ गया वही करो, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। रिजल्ट होगा देखा जाएगा। ओके। do or die situation. हाँ, तो कोई इसका एक कॉन्ट्ररी व्यू है कि हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए हमेशा? Not necessary, it could be a do or die situation. हम्म, You have to do it. In forces, we say always cater for reserve. right. So basically a backup option, Giri sir. Yes, Right. it is there. But of course, Hmm. plan of action is one only. Hmm. It's Yeah, also plan of affecting action is sometimes. one, but like Deviation from plan, as Mr. Mohan said, there can only be one plan. exactly. So there can So only be one plan, And but that there is. plan is arrived at after considering all the options. Mhm. The backup, that is reserves, are only to meet the contingencies Right. arising within that same option. Exactly. So In basically, but wartime, we use these type of ideas where we burn our bridges so that we don't have any option to retreat. right. Right. Yeah. So they are there. So, but an ideal situation is, as जैसे गिरी साहब ने कहा था, whenever you take an action, whenever we make a plan, we do it after contemplating all the options. So it is very important that we don't start with a single option, like we explore all the options before we take a decision. Giri sahab, you agree with me? Yes, that is correct. And that's why I said ki after considering all the factors, we Yes. arrive at a logical conclusion. Exactly. And in that decision making, because this is a decision making process. Innovation Yes. is also a decision making process. Whenever you Now, decide to do it. You must have seen that the commandants, my colleagues, they all are doing work also, attending class also. Mhm. It shows our sense of responsibility towards our job. It also shows that commandant knows that it is he only who is responsible for anything happening in the battalion, Right. that he is going to be asked for any good and any bad. Right. So that is sense of responsibility, and that is why decision making has to come from the commandant. Right. Decision making has to come Nobody- from the leadership. Yes, nobody else can give decision. Right. The authority to decide cannot be delegated to someone else when responsibility is mine and mine only. Absolutely. So authority and responsibility go side by side. Yes. हाँ, जैसे स्पाइडरमैन मूवी में पीटर पार्कर के अंकल बेन ने कहा था, with great power comes great responsibility. Responsibility, yes. Because that is why. That is why, of course. But like the crux of it is that, like before we take a decision, it is important that we actually, take all the options into consideration. हम लोग option को ignore ना करें. That every decision taken is deliberate. Absolutely. And you also have to see, the commandant is the senior most person in the battalion, Mm-hmm. presently by age also, and Mhm. by virtue of seniority also. Right. Exposure also, Mhm. exposure to those nitty-gritties. Right. So at times, naturally, you decide on your own, Right. rather majority of the times. Right. Yes. So, those are like, but there might be some decisions which are taken by your juniors also at their level. कुछ decisions वो लोग भी लेते होंगे. No, that is not decision. You see, those are only actions in conformity to the decision given by the commandant. Okay, so like commandant is the only person who is the decision-making authority. Yes. That is why he has been placed there in command. Okay. So like, let's say like an assistant commandant, does he have some decision-making authority? You see, in what terms you are talking of decisions? What terms? Situational decisions. Yes, situational decisions, of course, he will take. He is the commander on ground. Control. But when things are at a different level, the Mhm. decision will come from the commandant. The Right. commandant will assume charge, Mhm. whether he is sitting at battalion headquarters. Right. From And situation to situation.
Even Right. a constable will take decision. Exactly. Who is So do on you- border, guarding the border on OP duty or ACP duty, even he takes decision. He fires in self-defense. He does not ask his company commander. Of course, of course, of course, of course. That So much training is given to everyone. exactly. And that's what I was trying to say, that, decision making is happening at every level, at some, in some But capacity or the other. these decisions, as I said, are in conformity to the guidelines or decisions given by the commandant. Right, absolutely. And everything is placed in the system, and everything has to Yes. go according to the system. Yes. Now Right. suppose the guidelines are non-lethal strategy. Mm-hmm. If troops have been directed to fire like this or with this weapon, Mm-hmm. fire in this direction or below so and so, whatever directions have been given. So Mhm. naturally, those guidelines, broad decisions have been given by the commandant to company commanders. They have briefed the troops accordingly. Mm-hmm. Now, if any situation develops, the person on duty will take decision. But where bigger thing is involved, company commander will take, and even if it is beyond his capability, the commandant will take. Right. That's how it goes. Right. But the underlying Oh. crux is that, before taking a decision, we deliberate on all the options. Yeah, because you see, many things are spontaneous. Mm-hmm. Like if any border meeting happening between two company commanders, naturally that is not in the purview of company commander to take any decision. Right. Then the commandant has to play a role. Okay. Yes. Cool. Yeah, point taken. Thank you, sir. So creating options is also one of the major factors when it comes to innovation. Then I'm going to show you one last video for the day. एक छोटा सा वीडियो. आप लोगों में से महाराष्ट्र से कौन है, मुंबई से? लेकिन आप लोगों ने मुंबई डब्बा वालों का तो नाम सुना होगा. Yes, मुंबई डब्बा वाला. हाँ, तो ये डब्बा वालों. Yes. has very less representation in BSF. Very efficient management. Yeah. So I'll just Apps like Uber Eats, Skip the Dishes, and DoorDash. It's hard to imagine this. In the age of food delivery apps like Uber Eats, Skip the Dishes, and DoorDash, it's hard to imagine this type of convenience without the technology. But there is one food delivery service which sends out more than 200,000 meals a day and has been doing so for the past 130 years. They are the Mumbai Dabbawalas, also known as Dabbawalas. In about 4 hours, they deliver home-cooked meals to people at work every day. And all without using modern technology. Mumbai Dabbawalas employs about 5,000 people. Many of them have had little to no education and have never learned to read. So how do they keep these orders in order? The Dabbawalas get on their bicycles around 9 a.m. and pick up homemade lunches from their assigned neighborhoods, which are generally the same every day, using what's called dabbas, or Indian lunchboxes. After picking up the lunchboxes, usually made by the partners, parents, or house staff of the intended recipient, they have until 10:30 a.m. to bike to the nearest train station. Over the next hour, they load all of the lunchboxes on the train. This is where keeping track of everything gets really tough, but they use a pretty basic trick. A vital part of their delivery service is a coding system, so the lids are labeled with letters, numbers, and symbols indicating where these lunchboxes have to be delivered to, who's delivering them, and the homes where they came from. Between 11:30 and 12, the Dabbawalas offload from the train and continue sorting. Between noon and 1, they deliver lunches to their clients. During this hour, over 200,000 deliveries are made across Mumbai. They all kind of have to work together in harmony in order to allow sort of the Dabbawalas to perform sort of at that level of performance. The Mumbai Dabbawalas are known for being punctual with their deliveries. Their mission statement since they first started running in 1890 has been to always deliver on time. They believe that delivering lunch is like delivering medicine. And so now as a mission statement, right, when you sort of think about that, you're not just delivering lunches to people, you're saving people's lives. The Dabbawalas don't just deliver lunches to people at work. They also pick up lunch boxes from the individuals after they're done and deliver them back to their homes the same day.
All this efficiency has the business community intrigued, including Harvard Business School, which has done a case study. The simplicity of sort of how they do things actually help them, so they don't have to deal with sort of a lot of complexity that we sort of typically find. So sometimes, keeping things quite simple and be laser focused on what it is that you're trying to achieve is really important. Tomke spent a day with the Dabbawalas in Mumbai for his research and thinks companies around the world can learn from the Mumbai Dabbawalas. In an age where we are so focused on modern technology, sometimes the best plan is the simplest. These orders in order. I said it weird. Many of them have had little to no education and can't read. Okay. It doesn't matter. तन्वी, ये डब्बे जो है सबके घर से लाते हैं? हाँ बिल्कुल सर, सबके घर से डब्बे लेकर आते हैं और पहुंचा देते हैं वापस उसी दिन पहुंचा देते हैं सर। 9 बजे डब्बा उठा लेते हैं, 1:30 बजे लंच के टाइम पे पहुंच जाता है, 3 बजे लंच के बाद ये लोग डब्बा उठा लेते हैं। बंदे के घर आने से पहले डब्बा उनके घर पहुंच जाता है। इतना एफिशिएंट सिस्टम 1890 से चला आ रहा है ये, और इन लोगों ने इतना अच्छा इनोवेशन किया है प्रोसेस लेवल पे कि इनकी गलती जो होती है अच्छा जरा इसका, हाँ थोड़ा सा इसका सिस्टम बताइए जरा कैसा। विदाउट जीरो एरर्स। जैसे मान लीजिए कि बंदा कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से आता है ट्रेन से बॉम्बे में। हेलो, am I audible? Yes sir, you're audible. या तो वो सुबह तो चल गया, अपने घर से आ गया, फिर वो डब्बा कैसे आता है, जरा इस पर फोकस करें थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल सर। तो जैसे सपोज करिए आपको अपने ऑफिस जाना है, तो आप अपना 9 बजे या सुबह अपना ऑफिस निकल गए, ठीक, क्योंकि मुंबई में बहुत ट्रैफिक होता है, सबको मुंबई ट्रेन लोकल पकड़नी पड़ती है, इसलिए लोग अपने घर से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। नो डाउट। तो अब उनको अपने घर का खाना चाहिए, बाहर का खाना यूजुअली रोज बाहर का खाने से तबीयत खराब हो। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा है। Arvind, sir, I think we can't hear your voice. You can't hear me? Yeah, we can hear you now. Yeah. Oh, you can hear me now? Okay. Yes. अब मेरी आवाज आ रही है सर, महेंद्र जी? हाँ, now it's audible. ओके। हाँ, तो अब इसमें क्या होता है सर कि यहाँ पर ठीक 9:30 बजे जो घर में लोग होते हैं, धर्मपत्नियां होती हैं, मतलब पेरेंट्स होते हैं, वो लोग डब्बा तैयार करके रख लेते हैं। 9:30 बजे डब्बा वाला आपके घर से डब्बा उठा लेंगे। हाँ, उसके बाद ये इनका एक बहुत ही स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जहां पर ये लोग हर डब्बे की कलर कोडिंग कर लेते हैं, ताकि उनको पता चल जाता है कि जितने भी हाथ डब्बा बदले, डब्बा किस बंदे का है। और फिर इनका ट्रेन के रूट पे, इनके जैसे 8000 डब्बे वाले हैं, तो ये लोग ट्रेन पे इमीडिएटली 10:30 बजे की ये लोग ट्रेन पकड़ लेंगे। 1 बजे तक ये आपके एरिया में पहुंच जाएंगे, 1:30 बजे तक आपके ऑफिस में पहुंच जाएंगे, आपको आपका डब्बा दे देंगे। 2 बजे आपका लंच हुआ, आपने लंच कर लिया, 3:30 बजे आके ये आपसे आपका खाली डब्बा ले लेंगे, दोबारा ट्रेन में आएंगे और आपको पहुंचा देंगे। और इसमें गलती की जो पॉसिबिलिटी है वो 1 in 1 million है। 10 लाख डब्बे डिलीवरी में एक गलती होती है। ऐसा सिस्टम है सर, इट हैज बिकम अ हार्वर्ड केस स्टडी। मेटिकुलस प्रोसेस। और ये प्रोसेस कैसे आया? क्योंकि इन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को यूज किया। बिल्कुल, जो इनकी स्ट्रेंथ इनके नेटवर्क में थी। नेटवर्क में है। गुड, नेटवर्क में इनकी स्ट्रेंथ है। और ये सबके सब मतलब ज्यादातर जो डिब्बे वाले हैं वो एक ही समाज से आते हैं। आप लोगों ने शायद महाराष्ट्र में एक वारकरी पंथ है, उसका नाम सुना होगा, वारकरी। ये संत ज्ञानेश्वर हुआ करते थे, बहुत बड़े संत। तो उन्होंने ये वारकरी पंथ की स्थापना की थी। ये लोग पांडुरंग भगवान की पूजा करते हैं, तो ये लोग ज्यादातर वारकरी पंथ से लोग आते हैं। सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, और इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि गलती के बिना ये लोग बहुत अच्छी तरह से डब्बा कर लेते हैं। तो जब प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई थी, उन्होंने डब्बे वालों को निमंत्रण भी दिया था।
तो 2 डब्बे ओहो। वाले हाँ, लंदन के बकिंगम पैलेस में गए थे इनकी शादी अटेंड, दूसरी शादी की ऑफ कोर्स, तो दूसरी शादी अटेंड करने के लिए। नहीं, हाँ, उनका yes. एक सेल्फ बिलीफ भी जुड़ा हुआ है इसके साथ कि ये जो हम्म, है, ये खाना खिलाना जो है, खाना पहुंचाना भी जो है ना, वो एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल और माने कि स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं कि हम बिल्कुल बिल्कुल। किसी भूखे को हम खाना दे रहे हैं, वो हाँ उससे भी जुड़ा हुआ है, ये इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। भाई, बिल्कुल। जो खाना खिला रहा है, जो बना रहा है, वो तो सबसे बड़ा आदमी है। बिल्कुल, वो तो सबसे अच्छा आदमी है, जो खाना खिला रहा है, जो बना रहा है। एग्जैक्टली। तो तो ये सबसे अच्छा। आपके घर का खाना, आपके घर का बना हुआ खाना आप तक पहुंचा देते हैं बिल्कुल। एकदम समय पर और बहुत ही कम कीमत पर। महीने का आपका शायद 350 या 400 रुपए का खर्चा आता है। बहुत बढ़िया। 10 रुपए में आपकी, 10-15 रुपए में आपकी डिलीवरी और बैक हो जाती है, और आप घर का शुद्ध बना खाना खा सकते हैं। हाँ, तो यही वाली चीजें हैं कि जब हम लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ यूज की, तो इनोवेशन तब होता है कि जब हम लोग ना तो ज्यादा रेडिकल होते हैं ना ज्यादा लूज होते हैं, इनके बीच में इनोवेशन होता है जब हम लोग अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत यूज करते हैं। और यही चीज हम लोग चाहते हैं कि आप भी ये संदेश लेकर जाए कि जब भी आप लोग अपने ड्रीम्स को, अपने जैसे आप लोग कमांडर्स हैं, आप लोग अपने अंडर कमांड को, अपने जवानों को, अपने कांस्टेबल्स को जब भी आप मोटिवेट करें, तो उनको बताइए कि अपने अंदर की ताकत को समझो, अपने अंदर के हनुमान को पहचानो तब आप बहुत अच्छी तरह से इनोवेट करेंगे। तो using strength is also like one of the tried and tested methods of creating innovation. And the final is preference for action. कि हम लोगों को ज्यादा सोच विचार करते रहेंगे तो इनोवेशन नहीं हो पाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है तो उसको कार्यान्वित करने में हमें लग जाना चाहिए। We should immediately start working towards implementing an idea rather than thinking that what are going to be the replications, rather than looking for evidence, ये किसी ने और ने किया है कि नहीं किया है, ये मुझे करना है तो करना है। So this is preference for action. और उसके बाद है कि then we have to get the right team. और इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बीएसएफ में आप सबकी टीम्स अच्छी हैं, आप लोगों का सिस्टम अच्छा है, आप लोगों का कैमरेडर बहुत अच्छा है, तो आप लोगों की टीम अच्छी है। प्राइवेट सेक्टर में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी टीम ठीक नहीं है तो इनोवेशन उतना हो नहीं पाता है, लेकिन बीएसएफ में ये प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि आप लोगों की टीम्स अच्छी हैं। तो आपके पास अच्छी टीम है, आप लोगों के पास स्ट्रेंथ है, आप लोगों के पास अथॉरिटी है, आप लोगों के पास रिसोर्सेज है, तो इनोवेशन कहाँ जाएगा, होकर ही रहेगा। तो with that being said, it's already 5:30, so it's time to close the session. So thank you very much for very patient listening. I really enjoyed being with you today, just like Yes, I good. enjoyed being with you. Yeah. So this was very, very interesting. Like I also learned a lot. Hopefully all of you also got something from this session. With that being said, thank you very much once again. Jai Hind, Namaskar. Thank you. Thank you both. Thank you so much, Arvind sir. Thank you so much. Hello, sirs. Good evening. Very tired faces, so I won't take much of your time. कल का एक brief बता दूंगा. For your convenience, I think I just put on WhatsApp group yesterday's Dr. Salvamurthy's sir's presentation. Some of you had wanted it, and for your convenience, I've put it in a PDF format, sirs, on the WhatsApp group. Neeraj sir, I will also provide, don't worry, the links for the videos as well in the group that you had shown, the videos that you had seen in today's sessions. I will also put the link for it also on the WhatsApp group. Yeah, and Bas, sir, as usual, please do provide us feedback. We are posting the feedback link on the chat. And kal hamare do hi sessions hain. One session that will be till the first half itself is on leadership crisis, the role of psychological preparedness. I think that's a wonderful session. It's going to be taken by Dr. Swati Mukherjee. She's from the Defense Institute of Psychology and Research in Delhi. So it's a very interesting session. And the next session is something that I hope you have insights, you take away insights from. I remember one of our commandants had said earlier in one of the sessions that in channelizing stress that we are reading about stress, but what if we get to know about some strategies or tips to go forward with? So our session post lunch tomorrow is on practicing mindfulness. So perhaps you can have some takeaways, on how we can foster channelizing stress in our under commands. So that's one of the sessions we look forward to. So kal ke liye do hi session hai bas, and that is all. Thank you so much, sirs.
please do provide feedback, and that's it. Jai Hind, sir. Thank you so much. Thank you.